हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास। और आज की जो हमारी वीडियो इसका टाइटल है बांग्लादेश प्रोड्यूसेस 97% ऑफ द ड्रग्स इट यूजेस। तो इस वीडियो की सजेशन जो थी वो हमें माही सरकार ने की, तो वो भी हमारे एक स्पेशल मतलब सब्सक्राइबर है, हमें जबरदस्त वीडियो सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत और ये वाली वीडियो भी मुझे काफी जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि बांग्लादेश के मेडिसिन कंपनीज और उस हवाले से हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी। जिस तरह हमने बेक्सिम को और नसीना फार्मास्यूटिकल कंपनीज दो हमने देखी थी, तो उसमें जो उनके मैन्युफैक्चरिंग के वो टेक्निक्स थे और वो सारी चीजें जो उनकी मशीनरी और वो सब कुछ वो यूज कर रहे थे, तो काफी जबरदस्त फैक्ट्री थी उनकी और बिल्कुल क्लीनलीनेस के भी वो बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव काम है। हाँ बिल्कुल, रिसर्च पर भी काम कर रहे थे और बहुत सारी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट्स भी कर रहे थे, उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स भी हुए थे बड़े बड़े और कंपनियों के साथ और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं तो वो भी बहुत आगे, फार्मा में बहुत जबरदस्त है। वैसे हम लोगों ने बांग्लादेश की और भी कंपनीज देखी थी, लेकिन जो स्पेसिफिकली हम लोगों ने अपनी सीना देखी थी या बेक्सिम को फार्मा देखी थी, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर था और जिस तरह मशीन सारा काम कर रहे थे, तो वो बहुत जबरदस्त था। फिर R&D पे बहुत ज्यादा वो काम करते थे और उनका वो कंपनीज बहुत पहले से भी बनी है, मेरे ख्याल में 1984 से कि कितने टाइम से वो बहुत टाइम से वो लोग फंक्शनल थी, तो काफी अच्छी कंपनी है। और मैंने मेरे ख्याल से उनकी की कमेंट्स में कहीं पे पढ़ा था कि बांग्लादेश जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वो है मेडिसिन या मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन है। हाँ, इस तरह कुछ है, 4th लार्जेस्ट है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था क्लोथ इंडस्ट्री में भी वो जो है सेकंड नंबर पे है, और उनकी वो भी राइस प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, या राइस में 4th पे है, इस तरह कुछ राइस में 4th पे मेरे ख्याल में। फार्मास्यूटिकल भी उनकी काफी अच्छी है। अगर वो 75% मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, 97%, तो बहुत ज्यादा है उनके लिए, तो बहुत ज्यादा है वो। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके जो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा और जो हमें पता चलेगा। बिल्कुल गाइस, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे यही एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस, देखते हैं बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और उसके बारे में। Several months ago, Sonia Mahmood started suffering from stomach pains. Her doctor prescribed her some tablets. One packet costs just 83 cents and lasts 2 weeks. After paying the rent, the gas bill and water bill, it's affordable. It's within my budget. Sonia is among the majority of Bangladesh's 165 million people who only use medicines that have been manufactured inside the country. Over the past 20 years, generic drug production here has grown 30-fold. Bangladesh is allowed to copy drugs already on the market without having to pay costly fees to the patent holders. It's a concession given to the country by the World Trade Organization due to its least developed country status. Bangladesh now imports just 3% of the drugs it needs, far less than many other countries. Pakistan imports 30% of its medicines, Vietnam 60% and Singapore 80%. The industry has become one of the most advanced sectors in Bangladesh. As many as 600,000 tablets are produced in this factory every hour, using state-of-the-art equipment and highly trained staff. More than 500 types of medicine are now made in Bangladesh, including cancer drugs and insulin. And prices are much lower than the originals. Sofosbuvir, originally made by Gilead Sciences, is a drug used to treat hepatitis C. Each tablet costs $1,000, but the Bangladeshi version, Hopetavir, costs just $5. And a single anti-cancer tablet, erlotinib, originally manufactured by Roche, costs $60. The Bangladeshi version, Erlokent, is $3.50. And many more drugs are on their way. We have almost 70% working in the research and development group. One for formulation and the analytical. So every year we have, from Incepta, I would say more than 50 to 60 new product launching in local market. The industry accounts for a modest 3% of all exports. Revenues last year amounted to $125 million. But foreign sales are growing at a rate of 24% per year, despite competition from India and China. And a number of countries, including the UK, US and Turkey, have formally recognised Bangladesh's rigorous testing process.
This is a popular anti-hypertension drug. It's been through the entire production process, but will be tested one last time before being exported to at least 15 countries, including the Maldives and Sri Lanka. The government has imposed price caps on all medicines, so ordinary people can afford them. The plan now is to capture 10% of the global generic drug market within the next 7 years, a goal Bangladesh is well on the way to achieving. Shamim Chowdhury, TRT World, Dhaka, Bangladesh. And Shamim's here in the studio with us again. Hello there, Shamim. So Bangladesh has done well in the generic drugs industry because it's been exempt from having to pay patents to the people that produced, that invented them. But a lot of other countries also have the same exemptions. What's Bangladesh doing that some of these other countries are not doing right? Well, there are other factors that come into play as far as Bangladesh is concerned. One is that there's a ban on the import of any foreign drugs, and that is to cut down competition for local producers. So even if you wanted to, you couldn't buy the brand names in Bangladesh. So that's one thing. Secondly, there's a very large pool of potential workers who can help produce medicines. And unlike the case of the garments industry, it's not low-skilled workers. These are chemists, pharmacists, biotechnology graduates. So you have a very strong professional pool base from which you can, have working inside these pharmacies to help produce these drugs. And finally, it's a massive market. We're looking at more than 160 million people who all need medicine. So when you have market demand, you are going to get a supply. So it's numbers. A number of factors have gone into, the position Bangladesh is in now as far as its pharmaceutical industry is concerned. Those concessions run out in 2033, though. What happens after that? This is something I put to some of the scientists at some of the pharmacy companies that we went to. They're not too concerned because the export rate is growing by about 24% every single year. At the moment, it brings in about 3% of the overall revenues, but they expect that to grow much higher. But at the same time, Bangladesh is also producing its own original drugs. There's a lot of research and development going on in as far as the industry is concerned, and they're hoping that they may well be able to patent their own drugs in 15 years' time. The general feeling seems to be that it's quite some time away. It's a booming industry. Let's keep doing what we're doing, and we'll cross that bridge when we come to it. Yeah. Shamim, I mean, one of the interesting things in your report that you pointed out there was that huge disparity in the prices of the drugs. And still, the makers of the generic drugs in Bangladesh are able to make a profit. Yes. Yes, they are. It could be a question of piling them high, selling them cheap. Again, it's a huge population. Many people need drugs. If you sell something cheap to many people, you're still going to get a profit. Economies of scale. Economies of scale. But the interesting thing about that comparison is that the makers of the patented drugs, the brand name drugs, are obviously making such a huge margin there. Yes, it's quite astonishing. It is quite astonishing, and it does beg the question as to whether there should be perhaps some kind of caps on Fascinating discussion. We've got more to come through the rest of the week. Tell us very quickly, Shamim, what we've got from Bangladesh tomorrow. So tomorrow we're going to look at the e-commerce business. More than 2,500 e-commerce businesses thriving across Bangladesh. मेडिसिन से रिलेटेड वो थी बिल्कुल इस वीडियो में. तो लाइक काफ़ी अभी जो एंड में इन्होंने बात की लाइक आई वांट टू कमेंट पहले उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा कि लाइक वो कह रहे थे कि लाइक जो पेटेंट जो ब्रांड ड्रग्स है उनकी प्राइस इतनी हाई है और जो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रही है वही सेम ड्रग है वही सेम फॉर्मूला है सब कुछ है उसकी प्राइस कम है. तो इट मीन्स चलो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग मान लेते हैं बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है बड़ी कंपनीज भी कर रहे हैं क्योंकि वो भी पूरी दुनिया को वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है बट फिर भी वो चीज़ जो है इतने लो पे तो उनके मार्जिन में कितना गैप होगा. लाइक एक टैबलेट जो है $1,000 पे और एक साइड पे $5 पे तो लाइक ऑलमोस्ट $995 का ये जो गैप आ रहा है तो अगर उनकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट $200 तक भी आती है. चलो ये $5 पे बना रहे तो इट मीन्स कि ये लोग 3-4 के अंदर बनाते होंगे ये $1-2 तक इनका प्रॉफिट होगा. सही है. तो अगर वो 200 पे ही बनाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 800 का प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हैं. तो लाइक दैट्स अब वही बात की उस पर एक कैप एक उसकी चेक होनी चाहिए लाइक
कि ये लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट किस बिल्कुल, तरह क्योंकि कमा रहे हैं। वही जो बिल्कुल मेडिसिन जो है वो इतने लो प्राइस पे वो हाँ लोग बिल्कुल बना रहे हैं और फिर उसको सेल भी कर रहे हैं इतने लो क्योंकि प्राइस उसकी पे। मार्केटिंग और सब कुछ करनी बिल्कुल, होती है, सिर्फ से हाँ। बनाना तो नहीं होता है। और इसके बाद भी उनको मतलब प्रॉफिट होती है, उनकी कंपनीज जो है हाँ वो बिल्कुल ग्रोथ कर रही है। उन्होंने बताया कि 24% जो है वो हाँ पर ईयर वो पर ईयर ग्रोथ वो कर रहे हैं ग्रोथ करी है और बिल्कुल। 140 कंट्रीज में जो है वो एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हाँ हैं बिल्कुल मेडिसिन को। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है इनके लिए। और मुझे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मतलब ये जो है इम्पोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हाँ थ्री इम्पोर्ट पे इन परसेंट लोगों ने बैन ऑलमोस्ट लगा हाँ, दिए कि तो लाइक 3% का ये लोग बता रहे हैं क्योंकि शायद ये कुछ ऐसी ड्रग्स स्पेशल होगी मेडिसिन हाँ होंगी। जो अभी बिल्कुल, तक इन लोगों ने हाँ बना बिल्कुल। नहीं पा रहे होंगे और बिल्कुल। पाकिस्तान भी जो है वो बहुत हाई नंबर पे हाँ मतलब वो बिल्कुल इंपोर्ट कर रहे 30% थे। पे कर रहा हाँ है बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान वाले भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो लेकिन जिस तरह बांग्लादेश वाले मैन्युफैक्चरिंग हाँ कर रहे उनकी हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग हाँ हमसे ड्रग्स ज्यादा है की, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा है और वो अपनी कंट्रीज के जितने मतलब उनकी नीड है तो उसको पूरा कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल तो मतलब वो कंट्री में जो वो मनी की सर्कुलेशन है वो अपनी कंट्री में अपनी ही कंट्री होती के है, अंदर वो मनी जो है घूम वो रही, बाहर नहीं प्लस वो जाती। एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं तो उससे अलग बिल्कुल, से इनको प्रॉफिट आ रहा है। जो इन लोगों ने वो बात की कि 2033 का जो इनका विजन है हाँ कि ये लोग जो है एक वो जो एक कंट्री बन जाएंगे, बिल्कुल, डेवलप्ड कंट्री खुद बन पर जाएंगे हाँ। पेटेंट्स वो तो देंगे वो लोगों नहीं को। ये लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को जो प्रिविलेज मिला हुआ है हाँ कि आप पेटेंट के बगैर जो है ड्रग्स बनाए तो वो बिल्कुल, इनसे इशू हट जाए तो इनके लिए एक इशू होगा। लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि लाइक जब वो टाइम आएगा तो हम उसके साथ उस टाइम डील करेंगे। अभी जो हम लोग बिल्कुल, अपना वो कर रहे हैं और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो दैट इज़ फिनोमिनल। और ये लोग इतने ज़्यादा मेडिसिन और सब कुछ, मेडिसिन की प्राइसेस वैसे अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लो है। बिल्कुल लाइक लो है। जैसे लाइक सर दर्द की गोली हो या वो तो हमें लाइक ऑलमोस्ट 10 to 20 रुपीज़ में मिल जाती है। बिल्कुल, तो इट्स ये लाइक तकरीबन 1 सेंट के बराबर होगा ना या 10 सेंट्स के बराबर होगा। हाँ इस तरह कुछ होगा, हाँ कम सिर्फ वन होगा, बहुत सेंट्स या होगा। 10 सेंट्स, हाँ 10 सेंट्स के करीब होगा इस तरह। बिल्कुल, तो 10 सेंट्स के करीब हमें लाइक नॉर्मल सर दर्द की गोली या आराम की गोली इस तरह ये हाँ। मिल जाती हैं। तो बहुत लो तो है, टेन टू बांग्लादेश से ट्वेंटी अगर सेंट्स पाकिस्तान में मतलब 10 हो तो हाँ बांग्लादेश में बांग्लादेश मेरे में ख्याल वो में और वो भी कम हो हाँ सकती कम है तो होगी। बिल्कुल। तो लाइक हमारे इस रीजन में उस वजह से वो काफ़ी कम है। तो बिल्कुल, गाइज यहाँ तक थी वीडियो और यहाँ तक था हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है वो आप पूरा करें, बिल्कुल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और अगर इस तरह और वीडियोस आपके साथ हो बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से, बिल्कुल किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के हवाले से, तो आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर हम ज़रूर ज़रूर रिएक्ट एड करेंगे। करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। गुड बाय।